Good morning. Welcome. We are so happy to have you. Minuji will be just joining, so we can start. So, welcome Hemantji. So, would you like to start by telling us what is distant healing, and then we will take Neelamji's questions. Yeah. Okay. Is it okay with the English and Hindi mixture, or then you want me to read to that one zone only? Yeah. No. You can mix the two as you are comfortable. Okay. Distant healing. The name itself says you are healing a person that is far away from you physically, right? So there is no exact definition for all these things. This is all abstract. So I can only say distant healing is you're healing any person who is far away from you. It may be 10 feet away, or then 10 kilometers away, or hundreds of kilometers away, or whatever it is. And it works. The far away healing works. If you have learned that art once, then it becomes very easy, I tell you. It takes hardly seconds, or not hardly a minute, for the person to get that healing. It starts if you are able to do it. So I would then define distant healing is like healing a person far away from you, be it whoever it is, he, she, or whatever it is, like a living being. So you can do that. Am I clear, or you want more something deepness into it? The question. Yeah, it is very because clear. there is no exact definition for all these things. You cannot define. This is not technical aspect or a mechanical aspect. So it's all upon your practice, your karmas, everything works together. All factors are there inside. So it depends how you develop yourself. Awesome. And Neelamji was asking, is it about Reiki? Yeah, definitely. But you can't call it Reiki because I've not read, but I've seen 2-3 books on Reiki, and I've seen people means there is some sign factor and some I read, but I was I just couldn't go into it. But yes, Reiki is also energy only, na? A form of energy. So they call it by different names, the chi energy, the Reiki, then we call it pranic or cosmic or whatever. Like all people have their own names, like all countries or whatever you say. They have their own language pattern and they work on it. But the energy is the same. The energy shall always remain the same. It was in the past the same, present the same, and the future the same. So it's all about exchanging your energy. If you have enough, then you can just share it with someone so that person get healed or balanced mentally or physically, whatever ailment is there. So you can say, okay, Reiki is also okay. It depends what you read, how you read, what you read, and what you are practicing. So the word is concerned accordingly. So I think Reiki is one modality. So is there any specific modality that you use? Nothing. Very frankly, I just started practicing it on my own. There was no method. Very frankly, I never used any method. Even if I read some books or whatever, I just started doing it. I was not into a certain thing. अभी जैसे कि ये चीज मैंने पढ़ी है तो अब मुझे उस लाइन में ही जाना है, वो एक फॉर्मेट में ही जाना है, नहीं. Basically, I just started meditating on an object, and then over here, and doing my pranayam regularly. And yes, of course, in some book I had read how to throw off the things, like we use the hand to just throw the vibes off wherever the person is without touching them. Also, you can heal them. So there were so many things I just started doing it, very frankly. So it started happening also. But once you realize that it is happening, then you are more curious and more happy, or maybe more satisfied doing it. So people were getting healed
and there were results. So I took it more seriously than like, yes, it's happening. So let's go ahead. And it works. It works. It does work, man. So distant healing is it's a very nice thing if you do it. Like you can do it on yourself also. Like suppose if you're sleeping and suddenly you find pains, then you can heal yourself also. With like suggestions on your own body wherever the pain is, or the people who are outside far away. You can just so yeah, I'll in the later stage I'll tell you how I do it. It's very easy. It's very easy. There is no miracle, chamatkar, nothing. It is just a type of a science. You can do it. Everybody can do it. Provided that he should develop himself a little more so that it works percentage wise more better. Like suppose if a person is able to heal 50%, then it should go beyond 60, 70, 80, 90. It's all upon the development. How you do it, how much time you give for that. So how we can develop ourselves? As always, there are the same common methods. First, meditate. Meditation is a must. And to develop the aura, you can say you should do pranayam regularly. Once you are able to do that, means with the interconnection, mind it, when you are meditating on an object or on yourself or on the third eye or wherever, like whatever you are doing, you're developing your concentration. Same time, if you are able to do your pranayam breathing exercises also, means correlated, interrelated, so साथ में करना है. And definitely you will see that your the object meditation does change into yourself. You start concentrating on your breath, automatically it happens. If you have done it, then you might know what I am saying about. Once you start with that first, second, third minute, and suddenly when you start breathing, slowly and gradually all your concentration goes on the breath. And you are able to see how the breathing is happening in, out, and all, whatever method you use as a pranayam. At the same time, your aura starts like spreading, widening around you. And one time comes when you are able to reach far away also. Like you can say the Sukshma Sharir jo bolte hai, wo develop ho jata hai. So definitely it reaches kilometers, hundreds and thousands of kilometers. As in the past, yogis used to do it. Today also there are a few. We have not seen maybe, but there are. They are able to heal you at will. Within seconds, you are healed of all your ailments or imbalances. So you can develop that. And there are many methods. It's not about like only this thing. Technically, the first thing is like meditation. Second is pranayam. And third is also like disciplined concentration is also there. We can follow something like different. You may feel like what is he talking about? But disciplined means organized. What I don't actually do it. But like कि इतना टाइम देना है और इसके साथ देना है, ये ऑब्जेक्ट के साथ देना है, फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे उस इंसान को सपोज आई एम meditating on an object, say it is a flower or a certain point, like whatever drawing or something you have done, and then after like practicing it daily for maybe minutes or hours or how much time you give, and when you are supposed to heal the person, that time you can bring in the image of that person mentally and what ailment or imbalance it is going through physically or mentally. You can concentrate on that particular area and you can suggest. And you can suggest the person mentally from far away. And definitely results have come. Like if you are able to do it properly, then 100% each and every person will feel the change. But you are undeveloped, your body, your mind, your vibrations, your aura is undeveloped, you may see less results or maybe no results, whatever. So it's basically upon you, how much you practice or how much your passion is, or that you say now, so that love should be there for healing someone. So even if you're at that time, I say when you're emotionally
attached, or maybe the passion is there, then even the less of practice may heal the person opposite to you, because that feeling is that you want that person to get okay. Are you getting me what I'm trying to say? Yes. So definitely, like, it's up to you. I would say it's up to the person how much you want the opposition of person to get healed, whoever it is. So if you're like, yes, मुझे ये करना है हर हाल में, इसको ठीक करना है, बस आप लगे रहो, and the reward will be there. If you are true enough, honest enough, the result will come. It's not about like getting a certain degree or anything. There were no degrees in the past. So nowadays we have hundreds of degrees and all those things, but there was no degree. A person sitting in a jungle would need a person who is staying in the village or a city. He never had a degree, but yet his powers were immense. He never had levels of healing 1, 2, 3, 4, nothing. But yet he was more powerful than we people who do it in a organized manner. So it's up to your practice, how much your passion is to do that particular thing. So development, coming back to the basic thing, the question is like how you develop it. So yes, definitely concentration first. That is object meditation. You can keep an object, whatever you feel like, whatever you like. Meditate करो उस पे, concentrate करो. Yes, one more thing, blinking कम होगा तो अच्छा है. Even when we are like meditating with closed eyes into the center of the forehead, third eye. That time also, if you have seen, if you are practicing, any one of you, when your eyes are closed, still you are blinking. Do you know that? Have you ever experienced that? The eyeballs go like it's blinking. Have you experienced that? Any one of you? Hello. Yeah, sometimes you see if someone is sleeping, so, but yeah. So when you start meditating, then suppose I'm closing my eyes, and still like you'll feel that you're blinking, even if the eyes are like closed. That thing does happen in the initial stages of meditation, and as time passes by, you are able to stabilize that thing. So the more it is stabilized, you understand that your power is becoming immensely like more and more stronger, like, because the thought force becomes vast, and your gaze on that particular object becomes steady, like you are able to 100% concentrate on it without any effort. See, if you are putting an effort, that is also okay, but without effort, it is more okay, I would say. It's the best. Because you are able to do it easily, just like you're walking, talking, or whatever it is. You're just taking it as a play game, like, and it's happening. But then it's really like practice, I would say. To some, it comes very naturally. They are born with that because of their past karmas. That is a different issue. Many of them, like, they are born like that. You can't like, they are blessed, I would say. But here, if you want to develop it properly, yes, meditation is a must. Begin with the object meditation, slowly go into the inner self. With that, go into rhythmic breathing. As I always said, they are all related with each other, all the factors, whatever you. And third thing is like the food, diet. If it is simple enough, like less spicy and less oily, then it will work more, mind it, on yourself also and others also. And that I can assure you 100%, because hundreds of times I've done that, and like there were results, like amazing results, I'm telling you. Because food is main thing. Like today now, 80 to 90% of the food that we eat is incorrect. हाँ, मजबूरी है, खाना पड़ता है, I understand. Everybody has a problem, time problem. ठीक है, बाजार में चीज अच्छी, but still opt for a very light food, simple food, include maximum of salads and fruits and whatever in the natural state. I mean to say the food which is natural in state, which is uncooked or unbaked. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अग्नि पे या फिर वो बेक्ड नहीं होना चाहिए. सिंपल फूड खाने की कोशिश करो and see the immense changes in whatever work you're doing, and including this feelings या जो भी हो, मतलब
whatever you are practicing in this field also, 100% आपको फायदा होगा. नहीं हुआ तो आप मुझे फोन कर सकते हो कि नहीं हो रहा है सर, होना ही है. अगर ये तीनों चीजें साथ में जाएगी तो विद इन अ वीक to 15 days you will find yourself like you are changing, not even like months and all. I'm telling you, only 15 days there will be a vast change in you, and that has to happen if you're practicing for more than half an hour. If you're going beyond 1 hour, 2 hours, then amazing results will come. So this is how you can develop your healing powers. And of course, if the person is the patient or the client or the student is in front of you, then of course you can use that magnetic throw-offs or pranic throw-offs with your hand, or then touch, what we call that passing of vibrations, magnetism, etc., etc. That works. Person comes to know that, okay, oh, I'm receiving some vibes into my hand. When you're touching that person, like you can feel, the person can easily feel that going something that is going, passing through. And that will be stronger and stronger if you practice more and more. All these 3-4 things you have to really like work on it. But then if you love the subject, then it is not called working. You're enjoying that. That is how you can develop it. There are many things that if we have only 1 hour, so we can't discuss all the deep things, how we do it and whatever. Like, but in short, like this is how you can develop your healing power. How does it work? Like whether when we are here, yeah, right. So how does it work? Technical aspect is like, once, if it is inherent or blessed, that is a different thing. First point. Second, when you're practicing your methods like meditation, pranayama, food habits, then you have already started developing your aura vastly. It goes beyond and beyond. It's spreading everywhere in the atmosphere. That aura means, suppose I'm doing pranayama, I'm doing it for nearly 30-40 minutes. As the time passes, you can feel in your hands the vibrations. The whole body vibrates. You can feel the energy. Suppose I'm looking at, these are my fingers. So if I'm feeling like, okay, I want to like just feel like on my thumb, the energy passing. Okay, मैंने देखा अपने thumb को, तो मैं उसको pass कर रहा हूँ वहाँ पर. So immediately I can feel the sensation कि यहाँ पर heat है या tingling है या vibrations है, current है, जो भी pass हुआ. So immediately your feeling आती है. If you practice properly now, you will find it within a few days. Some people find it within hours also. It depends upon how much आप अंदर गए हुए हो उसमें. So how deep you are into it. So now I'm just telling myself, okay, the vibrations are passing there into my fingertips. Yes, I can feel it immediately. So that thing means that thing works. जैसे कि अभी suppose you have a headache or a body pain or whatever, and you are in front of me. If I touch your forehead, or if I just like catch your finger and I pass my vibrations to you, it can be like whatever the words we use, chi energy, reiki energy, pranic healing, cosmic healing, whatever you say. But if you are able to pass it, then you have passed. Because what matters is the result to the end person, like whoever is the subject or the client, patient, whoever it is. अगर वो receive कर गया तो आप जीते. You are able to do it. It's as simple as that. And in far away case, what I do is I'll suggest like what I do. I just close my eyes. I just bring in the image of whatever I practice or my guru. मेरे गुरु जी को याद करता हूँ. And I take the name of that person. I bring his image in front of me, and I just touch them mentally. Like, okay, I'm touching his forehead. Okay, if he has a pain in the arms, okay, I'm touching his arm. Whatever place it may be, and they find the difference within maybe hardly a minute or so. Like, and they start finding the difference. Like, okay, हाँ sir, मुझे अच्छा लग रहा है. I'm feeling the difference. Many people do get healed within 1 or 2 minutes also. It's not about hours also. But yes, if the problem is deep, then it may take hours and days also.
It's not that everything happens in a minute or a two. It depends upon what that person is going through, how deep the problem is, whether it is karmic or whether then he's just had a fall and physical, or then just a small bit of mental imbalancement, like बोलते हैं ना टॉर्चर या कोई एक चीज देख ली तो वो एक फोबिया टाइप डेवलप हो जाता है, डर, whatever, there are thousands of things like that. So definitely it works when you're doing it. अगर प्रॉब्लम बहुत डीप है, बड़ा है, तो टाइम तो लगेगा ना. आप भगवान तो हो नहीं, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया और हो गया, नहीं. उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, गिव द टाइम. So it's so simple but so vast. If you talk on that, you can talk for days and days with experience and all those examples and all. But this is simple thing, how you heal a person. And if you are able to do it, you better do it and you will understand it. Like if you're doing that practice for 15 days, try to heal the person, whoever it is, and it will give results. Definitely it will give results. So it's very simple. There is no big like study behind it or anything like that. It's all about doing, practicing practically. Like करो, करो, जो करोगे तो आपको उसका जो अंजाम है, जो रिजल्ट है, वो भी दिखेगा. Are you getting my points? Am I clear? Yes. Because करोगे तो होगा, नहीं तो So नहीं I होगा. had a question here. I can't hear you. Pardon. Hello. Do you mean to say, Hello. The audio is we don't? unclear. Can you hear me now? Not yet. Okay. Can you hear me outside? Ah, Actually, yeah. so Okay. Now, okay, clear. can you hear now? Yes, yes. Yeah. Okay. So I was wanting to know that you are saying that without learning any modality, we can still do this distillation. Yeah. You tell me. Normally तो हमें normally now यही there are- सिखाते हैं ना कि रेकी करो, ये सीखो. हाँ, तो बुक्स देते हैं आपको, 100 200 500 पेजेस की बुक्स पढ़ाते हैं, अच्छी बात है. लेकिन वो तो सब थियरी है, जो कि एग्जाम्पल बेस्ड है. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वहां पर लिखे जाते हैं. तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम से आए कहाँ से? प्रैक्टिकल जो हुआ वो लिखा कहाँ से? उसने किया होगा तो लिखा है ना बुक में. जो ऑथर है उसने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तो बुक लिखी ना. क्या ऐसे ही लिख दी, जस्ट मन में आया और लिख दी? ऐसे तो नहीं होता ना. अगर मैंने मेरे पास 100 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं और मैं उसको लिखूंगा पैराग्राफ वाइज, पेज वाइज, चैप्टर वाइज, तो वो 100 चैप्टर बनेंगे ना मैडम. तो आप उसको स्टडी मतलब करेंगे. कोई और मोडालिटी सीखने की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं भी है. डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं. ओके. नहीं, मैं किसी चीज के लिए नहीं है, क्योंकि हर चीज, सी द वर्ल्ड इटसेल्फ, द यूनिवर्स इटसेल्फ वाज बोर्न आउट ऑफ एन आइडिया. राइट. So were there books? Who created the universe? Did he read books to create the universe? So okay, there is organized things. I do believe, because nowadays, like I feel it is all commercialization. That is what I feel, very frankly. But practice needs no commercialization. It's up to you how you handle your mind and body. I hope it's nothing like I know many people have told, like, but they like I have got some good answers also and some bad answers also, experiences like unorganized है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इसका. So that was what I faced. Okay, but I told, okay, like let's start healing, or let's start doing something, and let's see. After reading 1000 pages का book, आप जो हीलिंग करते हो वो भी सेम है, और मैं बिना पढ़े या ये भी वही हो रहा है क्या देखते हैं. तो वही होना है ना, जिसको अच्छा होना है वो अच्छा होना ही होना है. लेकिन आप 1000 पेजेस का बुक पढ़ने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी. बुक पढ़ने के बाद क्या आप थोड़ी पावर आ गए आप में, या आपका वाइब्रेशन डेवलप हो गया, और डेवलप. आप 1000 बुक पढ़ लो और मुझे बताओ वाइब्रेशन डेवलप हुआ क्या बॉडी? नहीं होगा. जब तक आप खुद नहीं बैठोगे 10 मिनट तक, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है. हाँ, आप जब बुक्स पढ़ रहे हो ना, तब उतने मोमेंट के लिए आपको लगेगा कि आप उसके अंदर चले गए और आप वही हो इमेज.
तो आपको लगेगा हाँ मैं कर पाता हूँ, लेकिन वो एक टेम्पररी जोन है उतने टाइम के लिए। बाद में जब वो बुक बंद करोगे और बाद में लेके बैठोगे किसी में, तब पता चलेगा आप क्या कर पाते हो। अगर वो इम्प्लीमेंट किया आपने पढ़ने के बाद तो उसका फायदा है ना, किसी ने लिखा हुआ चीज। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और बुक्स का अगर आपने हंड्रेड ऑफ चैप्टर्स पढ़ा तो उसका फायदा क्या है। मैथमेटिक्स के जैसा है, सर ने मैथमेटिक्स सम सिखाया और बिल्कुल। हाँ सर मुझे सब आ गया, घर पे जाके करने बैठे एक्सरसाइज, सब आंसर रॉन्ग। 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। यस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, तो वो कोई भी चीज हो, फिर वो स्टडीज हो या हमारी जो ये लाइन है वो हो, हीलिंग हो, हिप्नोसिस हो, काउंसलिंग हो, and everything works. It's all inside the mind. It's all inside your blood. How to development करना है उसका, वो आपके ऊपर है। देखो कोई सर कोई गुरु आके 24 घंटा आपको पकड़ के बिठाएगा नहीं, ये कर ऐसे कर, नहीं। वो रास्ता दिखाएगा, उसके बाद आप पे है कि आप क्या करते हो। आप पे, अगर आपको अच्छा लगा आप ज्यादा करोगे और ज्यादा करोगे और ज्यादा, फायदा भी उतना आपको भी होगा, सामने वाले को भी होगा। तो ये है। तो बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, then I don't feel it is difficult then, because you know, अभी मेरा ही एग्जांपल है, मुझे प्राणायाम और ये सब करने को बहुत लेजीनेस था। इतना लेजी था कि 5-10 मिनट, वो हर 2 मिनट में मैं टाइम देखता था, नहीं कितना मैंने किया, अरे कितना है ये। मगर प्रैक्टिस करते करते कब घंटे करने लगा मुझे पता भी नहीं चला। और अभी तो यहाँ तक ऐसा हो गया है मेरे घर में कि रात को मैं नींद में भी कभी कभी कपालभाति करता हूँ, तो मेरी वाइफ डर जाती है, अरे क्या कर रहा है रात। बट आई नेवर न्यू, आई वाज इन माय स्लीप एंड आई वाज डूइंग इट मेनी टाइम्स, इट हैपेंस। सो वो एक पूरा माइंडसेट बॉडी डेवलप ही वैसा हो गया है कि मैं नींद में भी कर लेता हूँ। सुबह ये लोग बोलते हैं अरे रात को तू ऐसे कर रहा था वैसे, मैं देना अच्छा ही है ना। Many a times that vibrations come into my head and like I suddenly get up scary, अरे कुछ पास हुआ, तो ये सब होता है मेरे साथ। ये लोग डर जाते हैं उठते देखते तो, बट देन आई रियलाइज अरे दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंड। सो इट हैपेंस, होता है, होने दो जो हो रहा है, पर एक नया एक्सपीरियंस मिलता है हमेशा। तो डिस्टेंट हीलिंग बहुत मस्त और अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप करोगे मजा भी आएगा, खुद के ऊपर भी हीलिंग करो, दूसरों पे भी करो, थोड़ा अच्छा कर्म होगा, लर्न ब्लेसिंग्स। Yes, definitely. Anything else like what we want to go through? Any questions? Yes. So what is the simplest thing that we can start doing? Like, because it still sounds like we have to develop, then one day we will be able. Yeah, it is. First of all, every human being has that power. Everybody knows. बुक में भी लिखा है और बातें घर से और लोगों से भी हमेशा यही सुनते आए कि हर इंसान में वो चीज डोरमेंट है। ओके, हीलिंग पावर्स है, कुंडलिनी है, सब है, सब कुछ है, भगवान आपके अंदर है, सब कुछ है। पर फिर भी ऐसा क्यों कि आप नहीं कर पाते? The only thing is you are not trying to like know it or trying to awaken it, or not like you're not trying to और छलांग लगाना बोलते हैं ना, कि आप डूबो ना उस पानी में तो आपको पता चलेगा पानी गहरा है, ठंडा है, नमकीन है, व्हाट इट इज लाइक, व्हाट टाइप ऑफ वाटर। आप अंदर घुसो ना उसमें, अंदर उतरो उसमें, पानी अपने आप में उतरो। Simple thing is that dive yourself inside that thing, try to understand. And I tell you very frankly, and the truth is that if people are practicing, और इधर भी आप लोगों में से अगर आप जैसे करते हो ना, आपको एक नया नया आइडिया आता है बेसिकली, कि मैं ऐसे करूँ तो, मैं वैसे करूँ तो, मैं ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करूँ तो ऑटोमेटिकली आएगा वो। एंड सडनली यू फाइंड दैट अगर 10 में से 2 चीजें भी काम कर गई तो यू इन्वेंटेड योरसेल्फ। यू हैव नॉट रेड द बुक, माइंड इट, you have not read the book,
still you suddenly find some 10 ideas, and out of that 2-3 ideas maybe it worked on a certain object or a person or whatever it is, on yourself. And then this has happened with me. That is what I'm telling you. I'm just talking about experiences over here in my whatever 1 hour I'm giving. It's like suddenly I read after 2-3 years in a book that अरे ये तो इधर लिखा है, मैंने वो कर दिया था. I never knew it was written in a book. I never knew. But it was already there. So everything is there inside you. और वो किन लोगों ने बुक्स में छपाया है, किन लोगों ने कहा वो सीक्रेट छुपाया है, सब कुछ अवेलेबल है यूनिवर्स में. आप जितना अंदरूनी कांटेक्ट बढ़ाओगे आपका, by the method of meditating, I said pranayam, so simple living, that is your food habits. Okay, less of lie. Of course, we all lie a little bit daily, I know. थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है इधर उधर, लेकिन अगर वो कम होता जाएगा तो माइंड उन चीजों से फ्री हो जाता है. का माइंड है ना, ऑटोमेटिकली एक लाइट हो जाता है. जैसे वो एक गांधी जी ने एक वर्ड सेंटेंस लिखा था, ट्रूथ हैज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, वैसा. तो वो जीरो हो जाता है. दैट जीरोनेस ऑटोमेटिकली कम्स दैट स्पेस टू यू, लाइक. और वही चीज है जो पावर है, वही चीज है जो हमको करनी है. जितना वैक्यूम क्रिएट करोगे उतने पावरफुल बनेंगे. जितना झूठ बोलना, नफरत करना, बैड फूड हैबिट्स, ये खुद के शरीर के लिए भी बोझा है, खुद के माइंड के लिए भी है. सबकॉन्शियस तो भूल ही जाओ. और अगर आपने डेवलप कर भी लिया वो सब करके, तो भी देयर विल बी अ पार्ट इन यू व्हिच इज नेगेटिव, व्हिच यू कैन कॉल जेलेसी. और देन बोलते हैं ना टिट फॉर टैट वाला दिमाग, कि इसने ये किया तो मैं वो कर दूंगा. ये सब आता है. पावर होंगे, पावर तो प्रैक्टिस करोगे तो आना ही है थोड़ा तो, क्योंकि वो जस्ट लाइक होमवर्क है, आपने किया तो वो डेवलप होगा. पर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अगर बाहर जाना है, उसको फटना है, बड़ा होना है आसमान, तो आपको सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है. ट्रूथफुल रहना मैक्सिमम जितना हो सके ह्यूमन. तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. जो जितना करेगा उतना पाएगा. It's not about financial what I'm talking. It's about your growth of your soul, the inward things which you are going to carry in life and after life. If you are able to do that, then great. Okay, so this is how it is. I mean the simplicity, like जो word use करते हैं, उसका मीनिंग ही यही है कि आप जितना सादगी से रहोगे उतना सब सरल हो जाएगा. Yes, are you getting my point? Or then if you're like feeling any confusion, please like you can stop me and ask me whatever it is. I'll try my best to explain. Yes. If anyone else has any question, feel free to ask, because there are so many people. Meena ji, Uma ji, Meena ji, Saili ji, Meenu ji, Anshu ji. I think everybody, we are still trying to get how to get Mera Yeah, I'm not getting it. Hello, just 1 second. छोटा सा question था कि क्या हीलर्स को भी हीलिंग, हेलो, यस, Yeah. क्या हीलर्स को भी हीलिंग चाहिए होती है? और अगर हीलर्स किसी को हील करते हैं, क्या वो हाँ. उसमें उन लोगों में वो कुछ ऐसा आ जाता है कि लाइक वो उनका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं? क्या ऐसे होता है? या उनको उसको, क्योंकि पंडितों ने से कब कोई यज्ञ कराते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमको कोई मंत्र दिए गए हैं, जब हम किसी के शनि की किसी की पूजा करते हैं तो हम घर जाके हम अपना मतलब लाइक उसको काइंड ऑफ वॉर्ड ऑफ कराते हैं. तो मेरा ये क्वेश्चन था, पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं, पर जस्ट रेलेवेंट है 100% रेलेवेंट. तो सच बात है. देखो, हर इंसान तो योगी नहीं होता. क्योंकि मैं तो जहाँ भी नेट पे और बुक्स में पढ़ता हूँ तो हर दूसरा इंसान बोलता है मैं कुंडलिनी जागृत कर देता हूँ, मैं 7 चक्र जागृत कर देता हूँ. अगर ऐसा है तो अब तक कम से कम 1-2 लाख आदमी की तो कुंडलिनी जागृत हो चुकी थी और दुनिया एक स्वर्ग की जैसी जगह हो गई थी. तो ऐसे नहीं होता है. तो
आप एक लिमिट तक डेवलप होते हो और आप जब दूसरों को हील करते हो तो कष्ट तो होगा, क्योंकि आप कार्मिक फील्ड में, कार्मिक जोन में काम कर रहे हो, तो उस दायरे में काम कर रहे हो, है ना। तो आपको उसका कष्ट जरूर होगा। आप अगर किसी को बुखार आया है, टेम्परेचर है 100+, और आपको हील कर रहे हो उसको 98 तक लेके आए, और आप अगर डेवलप्ड नहीं हो, आपका ऑरा, आपका इनर थिंग्स डेवलप्ड नहीं है एक एक्सटेंट के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा तो कष्ट हो सकता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे जानकार लोगों के साथ भी हुआ है। क्योंकि मैं पहले पैरालिसिस का भी किया था मैंने केसेस, तो बहुत ही एक्यूट था, एंड आई फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम, बट थैंक्स टू गॉड एंड गुरुज, दे हील्ड मी विद इन मोमेंट्स। एंड मैंने नाक घिसा लिटरली उनके सामने, हाथ जोड़ के, भाई सॉरी, आगे से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उतना डेवलप नहीं था। तो आप आपकी चद्दर देखो कितनी लंबी है, उसके बाद करो कुछ भी केस हाथ में लेने के पहले 100 बार सोचो कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, या इसका रिएक्शन मुझ पर क्या होगा। अगर वो सामने वाले का कार्मिक लाइफ में ही लिखा है कि उसको ये भुगतना है, आप दो ना, हीलिंग दो, लेकिन प्रेयर पहले कि भाई ये होने जितना है उतना ही होने देना, मेरा ऑरा सेफ रखो। जो भी आपके भगवान है, आपके गुरु है, आपके टीचर है, जो भी, तो प्रेयर करने के बाद ही करो, ताकि कष्ट कम हो आपको, है ना। तो वो, आप जैसे कि आप बोले कि वो मुझे मंत्र दिए गए बचने के लिए, तो वो क्या है, वो जब मंत्र करता है, जाप करता है, तो वो अपने बॉडी को एक उस ऑरा में डेवलप करके खुद को बचा लेता है उस मोमेंट के लिए। तो वो काम करता है, सब सच है। लेकिन ये भी जरूरी है कि वो हीलर या वो पंडित वो सचमुच ऑनेस्ट है या नहीं। अगर वो ऑनेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसका कर्म उसको आज नहीं तो कल मिलेगा फल, कोई बचा नहीं है। हाँ, वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका अच्छा फल मिलना ही है, तो वो नहीं चाहते हुए भी उसको ब्लेसिंग मिलना ही है। तो ये जरूर काम करता है कि कष्ट जरूर होता है, नहीं ऐसा नहीं। यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैं हीलर बन गया तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। आप कहाँ हो आपको पता थोड़ी है कि आपका क्या डेवलप हुआ है, कौन सा बॉडी का कौन सा चक्र और किस हद तक डेवलप हुआ है, नहीं पता है आपको। तो अगर ऐसा होता तो फिर गुरुओं की कमी नहीं है ना, और इंडिया में तो जरा भी कमी नहीं है, लाखों में है। तो फिर कितने डेवलप हुए, मुझे नाम बताइए जिनके सातों चक्र खुल चुके हैं, मुझे तो कोई नहीं दिखा। तो आप प्रैक्टिस करो, आपको पता चलता है कि चक्र तो एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं पता चलते, क्योंकि वो हर इंसान में थोड़ा सा इधर उधर होता है, यू कैन से। अगर मेरा कुछ लेफ्ट में है तो किसी का राइट में होगा, किसी सेंटर में होगा, थोड़ा तो वेरिएशंस रहेगा ही। बट व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड आवर्स, यू विल डेफिनेटली फील वेयर द चक्र इज। और फीलिंग्स भी आ गई ना, तो भी आपका हीलिंग पावर इनफ है। फॉरगेट अबाउट अवेकनिंग एंड अरूजिंग इट। Even if you are able to feel that factors, those 7 chakras, any one of them, start feeling it, they also understand that okay, you are going in the right direction and it is going to work for you. मैं बराबर सुन रहे हो थैंक ना यू। मैं क्या हूँ? हाँ, तो ये जी जी जरूर जी सर। आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सच मतलब कष्ट हो सकता है, तो उसमें कोई गलत नहीं कहा किसी ने। क्योंकि आपको किसने हक दिया है किसी को हील करने, तो फिर भगवान का क्या मतलब हुआ, फिर नेचर का क्या मतलब हुआ, फिर जो इस यूनिवर्स ने डॉक्टर्स और जो सब बनाया है उनका क्या मतलब हुआ। तो आप भी उनमें से एक हो ना, तो आपको भी थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना, तो नहीं होगा। आप अगर अच्छा, मास्टर हो, इफ यू आर बिकम अ योगी, फुल ब्लोन योगी, दैट इज, इफ योर कुंडलिनी is like awakened totally and it has went past through all the 7 chakras till the crown, एक्सप्लोड हो चुका है पूरा, तो आप कर्म से मुक्त हो चुके हो हर जन्म के लिए। फिर आपको कोई बंधन नहीं है, बिकॉज यू आर इजीली एबल टू डाइजेस्ट दैट पेन्स ऑफ अदर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम लाइक कमिंग बैक टू यू। आपको नहीं सहना पड़ेगा, और या सर आप से, कर्म मुक्त हो। हाँ, हाँ जी,
बहुत अच्छा आंसर, थैंक यू। एक साथ में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि कोई हीलिंग मांगे तब दे देनी चाहिए, क्योंकि आस्क हुआ है उस समय, रिक्वेस्ट पे हुआ है, बिना मांगे देना चाहिए कि नहीं, कि हम देख रहे हैं कोई सफर कर रहे हैं, हम अपने आप से कहते हैं हम दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसने नहीं कहा कि हम आपके लिए, तो वहां पे अगर आप एलेबोरेट कर सकें, थैंक यू। बिना, हाँ, बिना मांगे किया तो बताना भी नहीं है कि मैंने हील किया था, क्योंकि बोलते हैं ना, फ्री की एडवाइस है ना हमेशा कोई मतलब नहीं रखती उसको। मतलब आप कितना भी कर लो किसी के लिए, वो आखिर में उसका एक मजाक ही हो जाता है। मैंने मैंने मेरे लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया। तो इफ यू आर डूइंग समथिंग एज अ प्रोफेशन, और देन इफ यू नो समथिंग, डू इट। अगर सामने से बताया उन्होंने हील करो तो बहुत अच्छी बात है, तो करने को मजा और आएगा। आप किसी को हील करते हो तो आपको सामने वाला इंसान बोल रहा है, "अरे, आपको हीलिंग आती है, आप कर दो मेरी", तो उसका मजा ही अलग है। लेकिन बिना बताए करते हो, उसका भी मजा अलग है, लेकिन उसको बोलो मत मैंने हील किया है, क्योंकि आखिर में दुख आपको ही पहुंचना है। क्योंकि कल उठ के वो जरूर ये बोलेगा कि डॉक्टर की वजह से अच्छा हुआ, या घर की वजह से, या मेरे इसके दुआ से हुआ, उसके दुआ से। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू फील दैट इच और दैट हर्ट इनटू योर माइंड, लाइक अरे, हम कितने भी सिंपल हो लेकिन वो आ ही जाता है दिमाग में फिर। तो वो सब में पढ़ना ही नहीं है। मैं तो बोलूंगा आप बोलेंगे तो करो। और हाँ, आपको लगा कि वो इंसान he really needs very badly someone into his life to heal him, then it is okay. Otherwise, don't fall into that trap, because actually it is a trap where your mind gets a bit, हम लोग को ये सहना पड़ता है, क्यों करना है? तो मत करो, मैं बोलूंगा, बोले भी ना। हाँ, अगर आपको पता चले बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप करो उसको। रास्ता ही नहीं है और मुझे पता है मैं उसको रास्ता दिखा सकता, तो तभी बात अलग हो जाए। पर आप बोलेंगे ना, अरे मुझे सब आता है और मैं कर दूंगा, डोंट शो एनीथिंग, बी ऑन योर ट्रैक। क्योंकि सबको एक्सपीरियंस आता है, मुझे भी आया, आपको भी आया होगा, और सबको आता है, जो कोई भी हीलर है या जो भी ये लाइन में है ऐसे इन दिस एरिया। Yes, absolutely. Agree with you. सो enough of bad experiences, very frankly. People always say good experiences, I say there are bad experiences too. Why to take that boja on your head and go there? Simply दिमाग खराब करना है, उतना हमारा दिमाग वापस सिकुड़ जाएगा। हमको उसको वास्ट करना है, बढ़ाना है, तो उसमें मत गिरो। वरना एक सिंपल थिंग है, आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसा है तो हमारे इंडिया में आज भी योगी लोग हैं, जिंदा अवस्था में है, और सेवेंथ क्राउन, क्या सेवन चक्र के पार के लेवल से वहां तक पहुंचे हुए बैठे हुए हैं, तो वो आके सबको हील क्यों नहीं करते? वो तो वहां से सिर्फ एक इशारा ही करते तो लाखों आदमी एट दैट मोमेंट कैन गेट हील्ड। व्हाई दे आर नॉट डूइंग देम? बिकॉज़ कर्मा हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले। वो चाहते तो उनको तो सब पे दया आनी चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? कि उनको तो सबके ऊपर ये आना चाहिए, पिटी, लव, एवरीथिंग। तो वो क्यों नहीं करते फिर? तो फिर हर एक का कर्मा मैटर करता है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अगर उसको जरूरत है और भगवान आपसे करवाएगा, आपका अंतरात्मा खुद बोलेगा इसको हील कर, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, वो अंतर से आवाज आ ही जाती है। तो जबरदस्ती कुछ मत करो, फोर्स नथिंग विल हैपन। हेमंत जी, ये या सबका भला करो करके कर्मा का इंसान कैसे बन जाता है? और एंटिटीज हैं जो हेल्प करती हैं, कुछ ऐसा है कि आप अच्छा करते भी हैं और फिर भी कुछ ना कुछ हीलिंग नहीं होती है, या हीलिंग किसी किसी को मिलती है, तो वो कर्मा का क्या हिसाब है, क्या सिस्टम है? देखो, अगर मैंने इस प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें की है जो करनी ही नहीं चाहिए एज अ मैन, सपोज आई मर्डर्ड, सपोज एग्जाम्पल, and one fine day I find myself in a spot where my hand or leg is not working, and or maybe I get a certain disease. So if I am able to judge myself looking in the mirror, then I know what my karma is and I'm facing because of that. See, God gives you every answer, but you are not accepting it.
आप आईने के सामने डरते हो खड़ा होने से, सच बात ये। तो वो जब आप ऐसे लोगों पे हीलिंग करते हो ना, तो हीलिंग का असर, जैसे लास्ट कोई प्रश्न किया था आपने इससे पहले कि आपको भुगतना पड़ता है, कि आपको कष्ट होता है, 100% हीलर को कष्ट होगा ही होगा थोड़ा सा। तो हमको वो नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि हमारा इंट्यूशन, हमारा इंटेलेक्ट उतना डेवलप नहीं है कि हम पहचान पाए फट से कि इसने ये किया था इसलिए ऐसा हुआ है, तो अब इससे थोड़ा दूरी मेंटेन करो या एक हद तक फील करो। जितना हमको सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस हमको गाइड करता है तब तक करो। हम ज्यादा करने जाते हैं और हमको कष्ट होता है, सामने वाला हील होता भी है तो वो टेम्पररी होता है और वापस वो वही जगह पे वही बीमारी में फंसा रहता है। तो एवरीथिंग मैटर्स, एवरी सिंगल फैक्टर मैटर्स व्हेन यू आर हीलिंग or doing something good or bad for others. Every single thing, छोटे से छोटा पॉइंट भी। तो बोलते हैं ना, वो हर एक चीज जुड़ी हुई है, बैलेंस्ड है, आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके नसीब में लिखा है कि उसको आज उठाना है, उसको हील करना है, तो वो वंडर्स क्रिएट करेगा। और वो इंसान के नसीब में भी लिखा है जीना, अच्छा होना, तो हो सकता है वो अच्छा हो जाएगा और वो अच्छे कर्म करने लगे, फिर वो और सैकड़ों लोगों को हील करे यार, अच्छा रास्ता दिखाए। क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, तो जैसे कि वो एक मतलब लिटरली ही वाज अ गुंडा, यू कैन कॉल इट। ही यूज्ड टू फाइट, हिट पीपल, ड्रिंक, ऑल दोस थिंग्स। बट एट द एज इन हिज लेट 50s he suddenly went to some ये जो होता है ना, जहाँ इनको रखते हैं, what do you call it, रिहैबिलिटेशन। वो ठीक हो क्या है ना, टुडे इज नियरली 78, 67, 68, but he looks like a young guy of 35, 40 years, and he heals people, counsels people who do wrong things or they go into the drugs and all. I don't know what God has blessed him with. तो ये सब होता है, these are miracles, these are miracles। तो वो हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि जजमेंट मत करो, केस टू केस सब अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, चाहे वो हीलर हो या चाहे पेशेंट हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, हर एक का कर्म की लाइन अलग है। यू विल हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, यू टू अंडरस्टैंड डीपली। जितना आप घुसोगे अंदर दिमाग से, उतना आपको एक एक पॉइंट रोज पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है। आपको खुद इंट्यूशन आएंगे। बट एक्सेप्ट द ट्रूथ वट एवर इट इज। ठीक है, तो Thank you. am I to your point, or then I'm out of the point? Let me No, know. yes, So I'll then try to whatever I know I'll explain. yes, thank you. Yeah. Okay. Anything else? अभी नीलम जी ने एंटिटीज के बारे में बताया, तो व्हाट कैन यू आल्सो टेल व्हाट आर दे? Means I'm not getting you. Neelam ji mentioned about entities, so I have also come across this term, but then I don't know much about it. So if you would like to explain. In which terms, like Entity, like in healing, Neelam ji, would you like to say so? हाँ, कुछ एंटिटीज होती है जो आपको हेल्प करती हैं, कुछ आपको Yeah. कर्स, हाँ, कई आपकी एंटिटीज आपके अंदर नेगेटिव एंटिटीज और कुछ ऐसी होती है ना, उनके बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा, नेगेटिविटी एंटिटीज होती है, जैसे कोई कहते हैं ना कि आपके ऑरा को खराब करती हैं। हाँ और जरूर, वो तो पल पल होगी। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो शायद यही भी कहीं ऐसा नेगेटिविटी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। और बेसिकली पीपल सी, एज आई टोल्ड यू, हम तो आज इंडिया में रहते 150 करोड़ है हम लोग। तो डेफिनेटली आजू बाजू में ऐसे और जरूर होंगे जो नेगेटिव है या आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या व्हाटएवर इट। पर आपको उससे बचने के लिए आपका प्रेयर्स है या आपका मैं मेडिटेशन है, आपका प्राणायाम है, वो जितना करोगे, आपका जितना और स्ट्रांग होगा, उतना ही फायदे में रहोगे। यानी ये एंटिटीज कम से कम हरास करे या प्रॉब्लम करे आपको, जो भी है नेगेटिविटीज है या व्हाटएवर यू कॉल इट। हाँ, आप ये करते करते आप खुद डेवलप भी होते हो,
उसके दूसरा साइड ये है कि आप बचने के लिए कुछ करते हो लेकिन आप कुछ ज्यादा बन जाते हो, आप हीलर बन जाते हो, आप में खुद में पावर आ जाती है। तो फायदे भी है और डर है, वो डर निकलने लगता है एंटिटीज के। जो आप बोल रहे हो कि नेगेटिविटी की वजह से ये हो सकता है, वो नहीं होगा। जब भी आप इतने पावरफुल हो जाओगे नहीं होगा, और होगा तो आपको बचाने वाला सामने से आएगा। आपको किसी के जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की, क्योंकि आप अगर डेवलप हो गए और सच्चे दिल से आप सब कर रहे हो ना, आई कैन bet or challenge on it that in some form or the other a person would come and help you out and go away, and you will not know also कि मेरा सब हो गया। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ में मेरे साथ भी हुआ है, मेनी टाइम्स हुआ है, एटलीस्ट 6-7 बार हुआ है, मे बी मोर आई थिंक। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आया तब आपको ठीक करके चला गया। तो मैंने फेस किया है। आप बस अपना प्रैक्टिस में लगे रहिए, आप सिंप्लिसिटी से लाइफ जितना हो सके जिए। मैं ये नहीं बोलता सिंपल का मतलब है कि एंजॉय मत करो, लाइफ स्टॉप करो, खाओ पियो नाचो, डू एवरीथिंग, बट सी दैट यू डोंट हर्ट एनीवन पर्पस। तो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया व्हाट आई वांट टू टेल। तो आपको है ना वो जो एनर्जीज है ना, वो या ऐसी एंटिटीज है या जो भी है आप जो बोलते हो वो दूर रहेगी। और ये मेरे साथ एक केस में हुआ भी था। had faced a very bad client. Like she was not bad, but the thing was that she was facing some split personality type thing. It was very bad, I tell you. Uh, that family had taken her to nearly 8 to 9 states of India to heal her. Nothing happened. Nor the pujaris, nor the tantrics, nor the counselors. Just nobody could heal her. One fine day, they called me, and I went there. I did not know what the problem was. When I touched her hand, it was like a dead body. I was very scared, very frankly. I asked the family what happened. Can you tell me the truth? They hid everything from me. And second day, I was called for that counseling. I went and suddenly she arose everything inside her. And she was actually a patient, operated with nearly 80 stitches in her legs and heart area. Minded, I was scared because when that thing happened, I just prayed to my guru. जो भी अच्छी चीजें, अगर मैंने बोला एक भी अच्छी चीज लाइफ में की है तो मुझे अब बचा दी। रोने लग गया था नियरली में। तो बस ऑटोमेटिकली 2 मिनट में शांत हो गई। मैंने उसको पानी पिलाया, सर पे हाथ रखा, नॉर्मल हो गई। और मैं आई वाज जस्ट लुकिंग अप इन द स्काई लाइक थैंक्स गॉड। So it happens within the 2-3 minutes all the thing. So I would say you go with your mind clear so that you face less of all this thing. मेरा इरादा था उसको ठीक करना, मेरे मन में बुरा कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे का था, ना ही कुछ नेगेटिविटी, ना ही इच्छा, नथिंग। आई जस्ट वेंट ब्लैंक, भाई तू ठीक हो जा। तो यू आर गेटिंग हेल्प, यू विल गेट हेल्प। तो मेरा मतलब एक ही है, मीन्स जितना हो सके सिंपल रहो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैं फिर से कहता हूँ, खाने पीने घूमने में नहीं, खर्चे भी करो, कमाओ, सब कुछ करो, बट सी दैट द लेस ऑफ यू हर्ट समवन, लेस लाइज यू से, मोर ऑफ खुल के जियोगे ना, तो पावर्स जल्दी डेवलप होगी। ऑटोमेटिकली एक अजीब सा शरीर में 24 घंटा एक वाइब्रेशन रहेगा, मजा आएगा। तो am I near to your point or I'm going wrong somewhere now? Okay. Hello. Yes, it is. Like, So there are, गाइडेंस है ना, जैसे किस आपको आपके गुरु की गाइडेंस मिल जाती है ना। या तो वो इंट्यूशन हो जाता है, क्योंकि मेरे गुरु तो एक्चुअली मेरे डैडी के गुरु है, बट मैं उनको गुरु मानता हूँ। इफ यू हर्ड द नेम योगानंदा, तो आई फॉलो देम। तो डेफिनेटली आई गेट माई आंसर्स। अगर मुझे मैं कभी अभी, जैसे कि मैं गिर गया समझो चलते चलते, तो मैं क्यों गिरा,
तो मैं याद करता हूँ तो मुझे इंट्यूशन आ जाता है, सुबह मैंने ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, इससे ये हुआ। साइमल्टेनियस इक्वेशन है लाइफ। अगर आप बराबर से देखोगे आपको हर चीज का आंसर मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। इफ यू आर रियली लविंग योर गुरु, इफ यू आर ट्रू टू हिम, then you will get the answers immediately. That intellect will tell you this is why you got that good thing or the bad thing to be. So ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा आंसर, हर इंसान को मिलेगा, उसको बस कोशिश करनी चाहिए, मिलेगा। ओके, सो ये होता है। आप करोगे या आपने किया है तो आपको जरूर ये सब मालूम होगा, मुझे बताने की भी जरूरत, लेकिन करो तो शायद आने वाले दिनों में यह एक्सपीरियंस जरूर होगा। Am I getting clear or then confused? Yes. You are very clear. And thank you for sharing, because these are, valuable lessons that you have experienced and gone through. One thing, like मैं 1 घंटे में सब कुछ नहीं बता सकता, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हमको सब कुछ छोटा छोटा मोल्ड करके बोलना पड़ता है। एक क्वेश्चन पे अगर 10 क्वेश्चंस हम लोग अगर खड़े करें और उसके बारे में डीपली जाए, तो एक क्वेश्चन का एक दिन भी कम गिरेगा। सो ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं 40-50 मिनट्स में ये सब लाने की, बट टू गो थ्रू दैट एंड explain it or to experience it, it really needs time. Of course it is fun, like discussing those things and knowing, then you start practicing, then you hear someone's examples, and then the give and take happens, and definitely फायदा ही होता है। तो जो कुछ हुआ मैंने कोशिश किया कि थोड़े में सिंपल वर्ड्स में समझाने का। मेरा वोकैबुलरी कुछ इतना हाई बेस्ड नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करता हूँ, सिंपल। तो उसी में मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ बता सकूं बस। Thank you, Hemant, for sharing that. So I think we are already over time. So thank you so much, and we can wrap it here. And we look forward to having you again and hear more. It's 9 o'clock. Having more advice from you. I would request you to have a session of a trance session for more than 30-40 minutes. Yes. When you tell me when there are a certain amount of people, 10, 15, 20, then we can have a proper trance session. Yes. And we'll enjoy that session. Even I'll go in trance. We'll all go in trance. We'll have a nice time out there. Awesome. Okay. That would be great. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Yeah.